Welcome to our first day. Now we will talk about common English mistakes you are probably making. Introduction. First, you have to. I am Saloni Duvedi. Today's video we are going to talk about some of common mistakes, English mistakes that learners like you might be making without even realizing it. I know it can be, but frustrating when you are speaking and sentences, points, and some points out of a mistake. But don't worry, I'm here to help you fix these mistakes and speak English more confidently. So we will talk about first mistake. Mistake of articles. Use of a and the. We will talk about a and the. Let's start with a very common mistake in English. Missing articles. English, we use an and the before nouns. But many learners forget to use than or use than incorrectly. So, incorrect example is I saw a cat. No, I saw cat. लोग अक्सर यही बोलते हैं मैंने एक कैट देखी या मैं एक कैट देखता हूँ, बट ये नहीं बोलते एक नहीं आता है उसमें, तो क्या बोलते हैं वो I saw cat. This is incorrect word. This sounds wrong, right? The sentence should be I saw a cat. Why? Because when we mention something for the first time, we use a or an. Clear? Next thing. Number 2. Incorrect word order in a question. Next. Let's talk about question word order. In English, we need to use the correct order when asking a question to any question. Incorrect example, you are coming to the party. Is it correct? No, it's totally wrong. Correct example is this. Are you coming to the party? What? Are you coming to the party? Next, see how it sounds. Clearly, much better now. This is the correct way to ask the any question. Now, next word is, or you can say like next example is, are you coming for the party? Are you coming to the college? Are you coming to the shopping? These are the examples of mistake number 2. Now we will talk about mistake number 3. Now, many learners use very too much. While it's okay sometimes, using it all the times make your English sound less sound. Not a much better, not a much better. For example, she is very happy. She is very happy. Instead of always using very, let's try using two stronger word. For example, she is static. What? She is static. Then correct example is she is static. There are so many other words you can use to replace very. Instead of very big, you can say huge. Instead of very smart, say intelligent. What? आप क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम आपको वेरी यूज़ नहीं करना है. वेरी की जगह पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आप वेरी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि मच बेटर लगते हैं देखने के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको एक्सीलेंट. यूज़ बिग ना बोल के, बहुत ज़्यादा ना बोल के आप वहाँ पे यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. डन. नाउ मिस्टेक नंबर 4. Number 4 is confusing prepositions. What is prepositions? Now let's talk about prepositions like in, an, at, everything. There are small words, but they cause a lot of confusion. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, तुमने सुना होगा क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये मिस्टेक समझ लें कि ऐसी क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आप इंग्लिश बोलते टाइम करते हैं और आपको क्लियर नहीं होता है. नाउ कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशंस लाइक ए, एन, एक्सेट्रा, एवरीथिंग. एग्जाम्पल इज शी इज़ गुड इन सिंगिंग. शी इज़ गुड इन singing. Now the correct preposition here is at. How? She is good at singing. What?
She is good at singing. This is the correct pronunciation, is it? Remember, good at, good in is a wrong here. What? Good in or good at? Wrong pronunciation. You have to say what? At singing. Okay? There are many other prepositions, so make sure to study them. Done? Next, talk about another mistake, like mistake number 5 is using much versus many incorrectly. The last mistake will look at the confusing much and many. Their rule: simple use many for countable nouns and much for uncountable nouns. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बनानास की बात करूँ तो बनानास काउंटेबल हैं तो हम वहाँ पे मैनी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं शुगर की बात करूँ, क्या आप शुगर के जो दाने हैं वो गिन सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो. इज़ इट नॉट पॉसिबल? सो यू कैन से दिस इज़ द अनकाउंटेबल थिंग एंड वी विल यूज़ दिस फॉर मच. जो अनकाउंटेबल होती है उनके लिए हम मच का इस्तेमाल करेंगे और जो काउंटेबल होती हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मैनी का. चलिए समझते हैं. सिंस पीपल इज काउंटेबल, दिस इज रॉन्ग. द करेक्ट सेंटेंस शुड बी हाउ मैनी पीपल्स आर देयर. पीपल्स, मच नहीं लगा सकते यहाँ पे, काउंटेबल है तो हाउ मैनी आएगा. ओके, नाउ करेक्ट इज हाउ मैनी पीपल्स आर देयर, नॉट हाउ मच पीपल्स आर देयर. दिस इज टोटली रॉन्ग. यू हैव टू से हाउ मैनी पीपल्स आर देयर. वहाँ पे कितने आदमी हैं. But when we are talking about something uncountable like water or money, you use much. For example, how much water do you have? How much water do you have? How much money do you have? How much sugar do you have? How much coat for how many coats you have? आपके पास कितने coats हैं? Okay? आपके पास कितना कलर है? तो वहाँ पे हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? कलर. मीन्स अगर हम किसी एक कलर की अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तो हाउ मच कलर डू यू हैव? हाउ मेनी कलर्स डू यू हैव? डन. We will talk about conclusion. So there are so many just common mistakes that English learners make. Don't worry, it happens to all of them. इनफैक्ट मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था. ज़रूरी नहीं है ये आपके साथ में ही होगा. प्रैक्टिसिंग, more and more practicing help it, and soon you will be avoiding these mistakes without any thinking about it. Now, which of these mistakes do you make most often? Let me know in the comment box. Now, feel it, ask questions. I will be there to help your question answer.